Some big relief coming in for Mayawati. The Supreme Court dismissed the review petition today on the assets of Mayawati. There, massive relief coming in. The Supreme Court pronounced its judgment on a plea seeking review of its order quashing disproportionate asset case against former Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati, and it seems big relief coming in for Mayawati on that account. The Supreme Court dismissed this review petition. Well, the verdict was reserved in May this year, and in the very latest, the Supreme Court has dismissed the review petition. On the phone line at this point of time, we are joined by my colleague Jaskirat, reporting from Supreme Court. Jaskirat, a big relief coming in for Mayawati. Well, absolutely. Now, the entire crux of the case was that the CBI was asked to look into the Taj corridor case, wherein there were some discrepancies which were found. But on their own accord, they went ahead and booked a disproportionate asset case, which the Supreme Court found was going beyond the ambit of the Supreme Court's initial order. Why she was initially given a relief by quashing all the disproportionate asset case charges against her. Now, this happened a couple of months ago. However, a review petition was filed by an intervener, a person who was not satisfied with this case, who said that even if the CBI went beyond its ambit by registering the case, there was still sufficient grounds to actually go ahead and look into the matter for disproportionate assets of Mayawati. However, the Supreme Court today rejected the review petition, saying that there was no such order, that the CBI actually went beyond its ambit in that particular case, and that is why they upheld their own previous order and dismissed this review petition. Jaskirat, of course, a big relief coming in this particular case, but the CBI still has the writ to go ahead in the other disproportionate asset case that it has against Mayawati. Correct. This only affects this particular case in which the CBI had gone beyond the Taj corridor case, where, of course, there were allegations that that's were involved. But the CBI has complete independence that if they have enough evidence, they can go ahead for the fresh charges, a fresh case of disproportionate assets. However, initially they were doing so under the ambit of, or under the cover of a Supreme Court order which didn't exist in the very first place, which is why the Supreme Court had to go ahead and quash it against, quash the disproportionate asset case against Mayawati. But right now the CBI does have the independence that if they have any fresh evidence, if they have any sufficient ample proof, prima facie to go ahead with a fresh case, they may go ahead and do so. You know, stay on with us, Jaskirat. Breaking this news on headlines today, massive relief coming in by the Supreme Court for Mayawati. The review petition which was filed against Mayawati, its order, the Supreme Court today pronounced its verdict on the plea seeking review of its order quashing the disproportionate assets case against former Uttar Pradesh Chief Mayawati. Now, the bench of Justices P. Sathasivam and Deepak Mishra, which had clarified that CBI is free to probe the BSP Supremo during an earlier hearing on the case, passed an order today, and massive relief coming in. The review petition there stands dismissed. The review petition was filed by Kamlesh Verma, who was an intervener in the case filed by Mayawati in the Supreme Court for quashing the assets case against her. Now, while reserving its verdict on May 1st, the bench had said that the FIR in the case was quashed because the agency proceeded against her without properly understanding its orders, which were confined to the Taj corridor case related to the release of rupees 17 crore by Uttar Pradesh government, allegedly without sanction. Now, the judgment had not taken away CBI's power to proceed against her in a separate disproportionate asset case. The court had said Mayawati's disproportionate asset case, of course, today stands dismissed. Massive relief coming in for the former Chief Minister of Uttar Pradesh. Reactions pouring in. Let's quickly cut across and get in some reactions. उसमें उन्होंने डिटेल जजमेंट दे करके सारी सुप्रीम कोर्ट की और पुरानी रूलिंग्स को रेफर करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो निर्णय पहले का था 2012 का, जो उन्होंने जिसमें एफआईआर क्वैश की थी, वो निर्णय सही है। उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं पाई जाती जिसकी वजह से उस निर्णय को रिव्यू किया जाए, और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिव्यू करने से मना कर दिया है। सतीश जी, आज के फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जो पिटीशन थी उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इसका अगर आप मतलब समझा सकें। डिस्पोज ऑफ ये किया जाता है कि डिस्पोज ऑफ और डिसमिसल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो ऑब्जर्वेशंस हमने दिए हैं ऊपर, क्यों हम रिव्यू एंटरटेन नहीं कर रहे हैं,
उसके साथ में उन्होंने मैटर को क्लोज कर दिया है। आज ये मैटर क्लोज हो गया है और रिव्यू पिटीशन जो थी उनकी, उसमें उन्होंने रिलीफ देने से मना कर दिया है। अपना जजमेंट को रिव्यू का स्कोप होता है कि उनका जजमेंट पुराना जो था वो गलत है या सही है। उन्होंने डिटेल्ड रीजंस दे करके कहा कि हमारा जजमेंट जो पहले वाला था वो सही था और उसमें कोई खामी नहीं थी और रिव्यू करने की एक भी गुंजाइश नहीं बनती। जितने भी कारण रिव्यू के हो सकते हैं उनमें से एक भी कारण इसमें उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से हम अपना जजमेंट रिव्यू करें। आपके कहने का ये मतलब है कि अब सीबीआई के लिए दरवाजा बंद हो गया है कि बिल्कुल डीए केस में सीबीआई अब आगे नहीं बढ़ सकती है। जो एफआईआर जिसकी बेसिस में वो डीए केस उन्होंने लॉन्च किया था वो एफआईआर क्वैश हो गई थी और उस क्वैश करने वाली एफआईआर के ऑर्डर को आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मेंटेन कर दिया है। इसलिए सीबीआई इसमें आगे अब नहीं बढ़ सकती किसी भी प्रकार से। जो कंफ्यूजन था जब 2003 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया, उसमें बीच में क्या एक विरोधाभास था, जो क्या कंफ्यूजन था जो सीबीआई ने कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाद में क्लियर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 19 अक्टूबर का ऑर्डर था 2003 का, जिसके तहत उन्होंने उसको बेस बना के सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी ताज कॉरिडोर के बारे में और एक एफआईआर दर्ज की थी उन्होंने एसेट्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने रिट पिटीशन फाइल करके ये प्ली ली थी कि जो दूसरी उन्होंने एफआईआर दर्ज की है एसेट्स के बारे में, उसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई डायरेक्शन नहीं था और इसलिए ये एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी। उस आर्गुमेंट को सही पाते हुए 2012 के निर्णय में उन्होंने ये होल्ड किया कि सीबीआई अपनी हद से आगे बढ़ करके बगैर किसी